morning students. Hope you all are fine better and you are doing very well with your financial management. हमने financial management unit start किया अपनी last class में and we have discussed in details about the meaning of financial management, its role, and on the basis of conclusion we are saying that financial management is really very important for any business concern. और जितना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज हो जाता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाता है. In our previous class, I was discussing about the financial decisions. That optimum combination of financial decisions should be taken by financial manager if it wants to maximize the wealth of a company or maximize the wealth of shareholders. क्योंकि शेयर होल्डर की वेल्थ अगर ज्यादा होगी तो कंपनी की वेल्थ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी. तो उसके लिए हमने कहा था कि देट ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस. व्हाट आर दीज डिसीजंस जिसके बारे में मैं बात कर रही थी? दोज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन. Ideal combination of these decisions are to be taken by financial manager if he wants to manage the things related to the finance very effectively and efficiently. So, in today's class, we will discuss about details. We will discuss about investment decisions and financing decisions in details. Also, dividend decisions. So, Bajay, first of all, what are these financial decisions? Financial decisions which are taken by financial manager. I am again telling you the decisions which are taken by financial manager to properly utilize and properly deploying of sources of finance in an effective and efficient manner are known as financial decisions. It includes investment decisions. Investments means the decisions which decides investment of funds. जिन्होंने ऐसे डिसीजन जिसमें जो फंड्स अरेंज किए गए उनको किन असेट्स में हमें डिप्लॉय करना है, whether we have to deploy in long term assets or in short term assets, that is in fixed assets or in current assets, या फिर दोनों में अगर करना है तो क्या उनका proportion होना चाहिए. Deciding about all these things is known as investment decisions. So in investment decision, financial manager decides about the combination of investments of funds in fixed assets and current assets. कितना अमाउंट होना चाहिए. देखो fixed assets में जो investment होती है that is known as capital budgeting. And whenever manager is deciding to invest the amount of funds in investments of fixed assets, उनको परचेज करने में करता है तो हमें ध्यान में रखना है that while purchasing the fixed assets, huge amount of funds is required. इसीलिए इन डिसीजंस को बहुत सोच समझकर बहुत इफेक्टिवली लेना चाहिए ताकि जो हमारा डिसीजन है उसका इफेक्ट हमारी जो आने वाला फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर एडवर्स ना पड़े. So we have to take these decisions after deep thinking. So fixed assets में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है that is known as fixed capital management या फिर हम उसे capital budgeting decisions भी कहते हैं. These decisions are known as capital budgeting because a huge amount of budget is deployed on purchasing these fixed assets. इसलिए इसे capital budgeting decisions भी कहा जाता है. और current assets में जो हम अपने funds को involve करते हैं खरीदने के लिए that is known as we can say working capital basically. Working capital is required to meet day-to-day operations. बिजनेस को चलाने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने ऑर्डर्स जो हमें मिले उसको पूरा करने के लिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उन सब चीजों के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं दोज आर नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इट इज डिसाइडेड दैट how much amount of funds will be deployed in purchase of
लेना होता है, then it has to consider these three important things in his mind, and these are known as factors affecting capital budgeting decisions or factors affecting investment decisions we can say. अब ये कौन से factors हैं? नंबर 1, cash flows of the project. Cash flows means जो कैश का हमारा आना जाना है, हमने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उस प्रोजेक्ट से हमें कितनी कैश फ्लो, इफ कैश फ्लो तो कैश का इनफ्लो बिजनेस में रेगुलर है, I have in that situation on the basis of that we can invest our funds in purchase of fixed assets we can say. ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान में रखना है
debt source of finance will be raised, otherwise equity will be raised. Next is level of fixed operating cost. अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी में कोई प्रोडक्शन साइकिल है या कोई उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, उनके रूटीन के रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या किया जाएगा, वहां पर डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज नहीं किया जाएगा. रीजन क्योंकि वो भी एक फिक्स्ड हो जाएगा, यानी वो बर्डन ज्यादा हो जाएगा और हो सकता है इन फ्यूचर द कंपनी विल नॉट बी एबल टू मीट ऑल दोज थिंग्स. इन दैट सिचुएशन level of fixed operating cost also determines which type of source of finance should be raised. Next is control consideration. Share और debenture का जो difference आप लोगों ने किया, in that situation we had also discussed very important difference, that is cost of issue of debenture is interest, whereas cost of issue the share is dividend. Shareholders are the owners of the company. शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, इसलिए वो कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ऑनर्स, उनका स्टेटस होता है क्रेडिटर्स का. दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स. सो अगर बिजनेस में कंट्रोल रखना चाहते हैं ऑनर्स ज्यादा, तो इक्विटी विल बी प्रेफर्ड, अदरवाइज डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस विल बी रेज्ड. Next is state of capital market. Capital market means stock market. Stock market में अगर ऐसी सिचुएशन में जहाँ शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, डिप्रेशन इज देयर, तो फिर उस सिचुएशन में डिबेंचर्स को इशू करना ज्यादा सुटेबल होगा. अदरवाइज इफ देयर इज बूम, अच्छा पीरियड चल रहा है, देन शेयर्स विल बी इशूड वेरी सिंपल टर्म्स. So these are the factors which affect financing decisions which are to be taken by a financial manager. तो बच्चे आपके जो important question of second बना, that is what are the factors which should be kept in mind by a financial manager by making financing decisions. In making financing decisions, then you have to explain all these things, that these involve cost, risk, flotation cost, cash flow position of business, level of fixed operating cost, then control consideration और capital market की status क्या है, capital market का जो situation है वो क्या है. So this is we have discussed about the financing decisions. Now next is in our dividend decisions. Next very important concept, that is a very important decisions which should be taken by financial manager in a best way, in suitable way, that is dividend decisions. Dividend decisions referring those decisions where it is decided how
कंपनी उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है जिसमें वो रेगुलर इनकम डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को आसानी से दे सकती है।